हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट कैरियर पॉइंट। तो आज के वीडियो में मैं आपको कोई भी चैप्टर नहीं करा रही हूँ. वी आर नॉट डूइंग एनी चैप्टर इन दिस वीडियो. वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर assignment. Yes, I have collected some assignments for chapter number 11 and 12. As you know that your exams are now approaching near, so you have to revise the chapters. So chapter number 11, force and pressure, chapter number 12, friction, are some typical chapters which you have to work very hard for them. So I have made some questions like you can say I've collected one words, true, false, fill ups. So we are going to revise them. So let's start with the question, with the first, that is multiple choice type questions. First question is given: force of friction is directly proportional to. Force of friction is directly proportional to. If you know the answer, you can give in the comment box. Any of the answer you are knowing, so you can comment. Now, let me show you what's the correct answer. Force of friction is directly proportional to weight. You can also write down, you can also take the screenshots here. Second, which of the following is the least? As you know, static friction, sliding friction, C, rolling friction, and D, composite friction. So correct answer is C, rolling friction, as you have read in your chapter. Friction between two flat surfaces can be reduced by greasing. B, painting. C, using ball bearing. D, decreasing the area. As you have read कि जब हम लोग कोई machines होती हैं उनकी wear and tear you can say सकते हैं, मरम्मत की ज़रूरत होती है तो oil and greasing हम लोग करते हैं. Okay, so our A option is correct. D part is here, which is asking that द फ्लाइंग मशीन ऑफरिंग द लीस्ट फ्रिक्शनल फोर्स. मतलब एक जो फ्लाइंग मशीन है वो लीस्ट फ्रिक्शनल फोर्स को कब ऑफर करेगी? जब इनमें से जब फोर जो हमारे होंगे उनकी तरह, जैसे कि अगर इरेगुलर है और ट्री लाइक ए ट्री की शेप में है, आप कह सकते हो सिमेट्रिकल विद मेनी आर्म्स, या फिर स्ट्रीमलाइन. सो वो करेक्ट आंसर इज स्ट्रीमलाइन. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज लाइक दीज क्वेश्चंस. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर. नाउ लेट्स मूव टू fill in the blank type question. So यहाँ पर आपको दे रखा है इसने fill ups. So first है हमारा frictional force always acts in the direction opposite. So our answer is opposite. मैं इसको छोटा लिख देती हूँ. Let me write. Wait a second. Now our first question is frictional force always acts in the opposite to the direction applied force. So it is so simple. Second is friction is caused by the dash of the surfaces in contact. So what is the answer? The answer is irregularities. Next question है 3, 4, 5 जो कि आप खुद करके दिखाएंगे. कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर कर सकते हैं. आई एम गिविंग यू some seconds. Now let me tell you what the answer is. So we are discussing the answers. So what is the answer? Let me tell you. तो थर्ड क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ये यहाँ पर आपका आएगा थर्ड पार्ट वाला. It will be limiting, and here will be static friction. If you want to take the screenshot you can take here. Now यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आएगा the roughness. मैं अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ आपको. So यहाँ पर maximum force of friction when the body just starting to move is called limiting value of the static friction. The roughness between the road and the tire permits safe driving. Fifth, the boats and ships are made lower to decrease the friction. So it is easy, I think. Yes. So now we will start our true false.
फर्स्ट ट्रू फॉल्स आपको बोल रहा है द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच ऑपरेट्स वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सो इट इज ट्रू और फॉल्स? Yes, it is true. Friction is due to roughness of the two surfaces in contact with each other. It is also true. Force of friction depends on the area of the surfaces. ठीक है, depends on the area of the surfaces in contact. It is false. The application of brakes to stop a cycle is due to friction between brake lining and the rim. नाउ नेक्स्ट आपको बता रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन. यहाँ पर फोर्थ आप खुद करके दिखाएंगे मुझे. कमेंट बॉक्स में आप अभी आंसर कर सकते हैं इसका. लेट मी टेल यू द आंसर. फर्स्ट मैं पहले ना फिफ्थ का बता देती हूँ, फिर मैं आपको फोर्थ का बताऊंगी. इतना आप इसका आंसर सोच के कर सकते हैं. फिफ्थ है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज ऑल्सो ट्रू. फिफ्थ है लिक्विड्स एक्सर्ट ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स देन अ सॉलिड अदर देन सॉलिड्स. सो इसका है आपका ट्रू, इसका फॉल्स था. सॉरी, ये तो आपका ट्रू था. इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ऑल्सो, इट इज़ फॉल्स. और यहाँ पे आपका ट्रू था. ये आपका आंसर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैन चेक. ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर. देन नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट असाइनमेंट. So now let's start the fill-ups. First is a push or pull acting on uncommonly is called what? It is called force. ठीक है. सेकेंड है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो इट इज नॉन कॉन्टैक्ट. सो फ्रेंड्स, अब मेरे पास यहाँ PDF है, उसमें से अब हम रिवाइज करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? सो मैकेनिकल फोर्स. सेकेंड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अनदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेट. फिफ्थ, if a given force is applied on a smaller area of contact, the pressure exerted by it increases. A camel can walk, run in deserts more easily as compared to a horse, donkey, etc. because its feet are broader. The SI unit of pressure is Pascal. Pressure is defined as force per unit area. Next, a push or pull. Ninth one है आपका. ठीक है. A push or pull on an object is force. 10th, a force of gravity is a non-contact force. The force of gravity is non-contact force. Next क्या है? The force acting on a body can change its position and shape. The force which runs a windmill is the mechanical force. 13, the magnetic force can act from distance. 14, the SI unit of force is Newton. 15th, 1 kgf is equal to 9.8. Spring balance is used for measuring the weight of an object. Chapter number 11 and 12 का Phillips एक और assignment है. Force of friction is directly proportional to what? Weight. Which of the following is the least? Rolling friction. Friction between two flat surfaces can be reduced by greasing. The fourth, the flying machine offering the least frictional force should be streamlined. Frictional force always acts in the direction opposite to the direction of applied force. Friction, sixth one है आपका. ठीक है. Friction is caused by the irregularities of surfaces in contact. 7, the maximum force of friction when the body just starting to move is called limiting value of the static friction. 8 क्या है? The streamline between the road and the tire permits safe driving. 9th, the boats and the ships are made lower to decrease the friction. Pressure. Pressure is defined as force which is written as capital F, or you can capital which is written as small f per unit area, that is A. Next है a sharp knife is more efficient in cutting fruits
than a blunt knife. Okay. 12th, units of pressures are Newton per square meter or Pascal. In liquid, pressure acts in all directions and pressure increases as the depth decreases. Air pressure can be measured by a mercury barometer. At a sea level, height of the mercury column in a barometer is equal to 760 millimeters. Now, here are true false which are very important. So, let's discuss some of the true false. स्टार्टिंग के थर्ड ना मैंने आपको पहले करवा दी थी, जो फर्स्ट हमारी पीडीएफ थी, तो हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, हम फोर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं. तो फोर्थ वन इज अ साइक्लिस्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ पुल ऑन द पेडल्स ऑफ बाइसिकल. फॉल्स. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स exerted by the earth on that body. That is true. Only the earth exerts gravitational force on an object. False. Magnetic force is a contact force. False. A force can change the direction of motion of a moving object. It is true. Ninth one. A spring balance actually measures the forces of pull exerted by the earth on an object. True. Tenth one. Force of friction is due to roughness on the surfaces of the bodies in contact. It is also true. 11th one. The SI unit of pressure is Newton per square meter. False, because it is a what? Area. Okay. Pressure due to liquid contained in a vessel is equal at all points on the surface. It is true. Hydraulic car jack is based on Pascal's law. True. At sea level, the air pressure is equals to 760 mm of mercury column. Yes, it is true. As you read in the 14th, fill up in the last one. Atmospheric pressure decreases with altitude. It is also true. So I have discussed some of the assignment question with you, because as your unit test or the periodic test, or you can say the exams are approaching, so these are very important for you to do. So now in the next one I will also upload some of the assignments. If you want, then you can ask me that for what chapter assignment you want, so you can give your problems or the assignments of the chapter you want in the comment box. I will make the video of that chapter's assignment. ओके ये तो मेरे फ्रिक्शंस के रिलेटेड, और जो आपका फोर्स एंड प्रेशर था बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, सो मैंने इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट रेडी किया था. सो प्लीज़ इस असाइनमेंट्स के अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, सो यू कैन टेक नाउ. आई होप आपने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नेक्स्ट पेज का भी आप ले सकते हो. नाउ इट इज़ द लास्ट वन. सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे. अगर नहीं लिए हैं तो आप दोबारा जा करके ले सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, दिस इज द माई वीडियो. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, दैट दे ऑल्सो गेट good marks in their exams by doing these by learning these, by revising these one of assignments. Okay friends, bye bye, and don't forget to subscribe my Excellent Career Point and press the bell icon, so whenever my video is uploaded you will get the notification. Okay friends, bye bye.